कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं सिद्धांत दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल लिंगो फ्रेंड्स में। सो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कि हैज़ टू और हैव टू को हम कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि हम विल को कहाँ पे यूज करते हैं, और कुछ और वीडियोस भी मैं जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता रहता हूँ, जैसे कि फ्रेंड्स से रिलेटेड। ठीक है, और आज हम सीखेंगे हैज टू और हैव टू, हैज टू और हैव टू। और वो जो वीडियोस हैं, सॉरी, जो टॉपिक है हमारा हैज टू हैव टू, वो हम यूज कहाँ पे करते हैं, उसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट हैज टू, हैव टू। Okay, this we use for duty, obligation and compulsion. Okay, so this we use for duty, obligation and compulsion. So what is our duty? Okay, what is our duty, what is obligation, what is compulsion, right? So duty and obligation, like I have to go to school. Okay, he has to go to office, right? That is our duty. Suppose I have to make videos, so this is my duty, this is not my compulsion. Like suppose outside it is raining, क्योंकि हम बोलते बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, और मैं कहता हूँ नहीं बारिश में मुझे काम करना पड़ता है। ओके, बाहर धूप है और धूप में मार्केट जाके कौन खुश होता है? कोई खुश होता है? कोई भी नहीं होता। तो हम कहते हैं मुझे मार्केट जाना पड़ता है। जाना पड़ता है मीन्स दैट इज माई कंपल्शन, दैट इज माई कंपल्शन। जहां पे लास्ट में जो सेंटेंस होता है वहां पे आता है पड़ता है, मीन्स जाना पड़ता है, खेलना पड़ता है, काम करना पड़ता है, दैट इज, वो क्या होती है? वो हमारी कंपल्शन होती है। ठीक है, ना है नी है, नी है ना होता है। जैसे मुझे जाना होता है, मुझे खेलना होता है, मुझे लिखना है। सो दैट इज आवर ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, दैट इज आवर ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। Okay, so how we use them, how we use, okay, first of all we write subject, okay, then has, have to plus object, has to have to plus object. So what is our subject? Our subject is I, you, we, they, he, she, it, or any name. I, you, we, they, he, she, it, or any name. समझ गए? I, you, we, they, he, she, it, or any name. अब I को हम कहाँ पे यूज करते हैं? अब हैज के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव के साथ हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि दोनों है तो अलग अलग, दोनों को लिखना भी अलग अलग पड़ेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम सबसे पहले यूज करते हैं हैज के साथ। ठीक है, तो हैज के साथ हम क्या क्या यूज करते हैं? हैज के साथ हम यूज करते हैं ही, ओके, शी, इट, और any name. He, she, it, any name or any singular thing. With have we use you, we, they, or any plural. जो plural things होती है, ठीक है, like plural noun, singular. So we use with has, okay, like उसे खेलना है, उसे खेलना है, ठीक है, so we say he has to play,
he has to play. Okay, he has to play. Sorry, here we do first form plus object. Okay, sorry for the mistakes. First form plus like subject plus has to have to plus first form plus object. Okay, like what is object? He has to play like cricket. Okay, he has to play cricket. She has to play cricket. Okay, any name like you can say Rahul. So Rahul has to play cricket. Rahul has to play cricket. Okay. So next is have to. How we use have to? अब have to को हम कैसे यूज करते हैं? ठीक है. चलो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस बनाना और सीखते हैं. ठीक है. Then we will start. Then I will tell you about have to. Where we use have to. हम क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं? हम जो हैज है, we will change हैज into does have. Has into does have. Okay. Now the question will be, does he have to play cricket? Does he have to play cricket? Okay. Does he have to play cricket? आंसर करेंगे तो he has. Then जो does और have है वो किस में चेंज होंगे? वो has में चेंज हो जाएंगे. ठीक है. So it will be he has to play cricket. He has to play cricket. Okay. Now how we will refuse? मना कैसे करेंगे उसको? We will refuse by he does not have to play. He does not have to play. Okay. He does not have to play. ठीक है. So अभी हम सीखेंगे कि हम have to को कहाँ पे यूज करेंगे. अभी हमने सीखा हैज को हम कहाँ यूज करते हैं. अब सीखेंगे हम हैव टू को हम कहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है. सो जब हैव टू हम यूज करते हैं तो हम सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस होता है लाइक किसके साथ हम यूज करते हैं. आई यू वी दे. ओके. आई यू वी दे प्लूरल नाउन. लाइक आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू. ओके. दे हैव टू. लाइक here we got he has to play. Okay. So now next video we will just write. We are going to write about they have to write a letter. Okay. They have to write a letter. Okay. So question, how we will make question? We will change have to into do they have to write a letter. Do they have to write a letter? Okay. How we will refuse? मना कैसे करेंगे फिर हम? They do not have to write a letter. Okay. They do not have to write a letter. Understood? So what you have to do, you have to just make some sentences. You have to write in the comment box also. And this video, in this video, if you have any kind of confusion, you just comment in the video. Whatever the doubt is, I am going to clear each and everything. So do not worry about the doubts. Okay. So first of all, just listen again. Okay. Once again, I am going to where we use has to, have to, like subject. Okay. How we write them? Subject has to. Okay. Have to plus we first. I forgot to tell you this in starting. पहले भूल गया था बताना. ठीक है. First of the verb plus object. Okay.
Has we use with I, he, sorry, he, she, it, any name or singular noun. Have we use with I, you, we, they or plural noun. Like for example, उसे खेलना है, उसे क्रिकेट खेलना है, ठीक है. He has to play cricket. Question: how we will make question here? By changing has into does have. है जो हम किस में चेंज करते हैं, यहाँ पे does have में चेंज करते हैं, फिर हम उससे क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं. Like does he have to play cricket? He does not have to play cricket. Okay. They have to. Okay. They have to write a letter. Now we will make the sentences with have to. Okay. They have to write a letter. Do they have to write a letter? This is question. Okay. Do they have to write a letter? अब मना कैसे करेंगे हम? They do not. They do not have to write a letter. Okay. So thank you for watching this video. In this video I have told you everything in a very nice way. So please just subscribe the channel, और चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करना है, you have to ask your friends also to subscribe, to press the bell icon so that you may get the notifications for your next videos. Okay, so for watching the last videos also you may just go to the channel and you may watch the videos. So please comment and just tell me how do you like, how much you like the video. वीडियो अभी कितने पसंद आई आपको, जस्ट कमेंट में कमेंट में फटाफट बताइए. और दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स सभी के साथ आपको शेयर करनी वीडियो, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं. यू हैव